I'm 27, and if I look at my life on paper right now, it doesn't look very impressive. I don't have a stable income, I don't have a job, I don't have like big chunks of money saved or like huge investment. I don't have a house or I did not buy a car. And when I look around and see people of my age, they are getting married, they are having babies, they have a stable home, someone is getting promoted, someone is traveling, and then, like, a small thought creeps in that, am I just behind in my life? Did I not do enough in my life? And if that's the thought that you also are sitting with, then I hope that this video will be a reminder to you that how being a late bloomer is actually not a problem. Hi lovelies, I am Katie. अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो तो welcome. I'm really glad that you are here. First thing first, let's just define first that what a late bloomer is. So basically, a late bloomer is someone whose life path does not unfold on the usual timeline. अब यूजुअल टाइमलाइन का मतलब क्या है? लाइक यूजुअल टाइमलाइन लाइक आई होप दैट आपने वो मूवी देखी है, ये जवानी है दीवानी. इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म. आई थिंक आई हैव वॉच्ड इट लाइक मोर देन 20-25 टाइम्स. मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो मूवी. सो इफ़ यू रिमेंबर, लाइक देर इज़ अ फेमस डायलॉग फ्रॉम बनी, रणवीर कपूर, दैट ऐसी घिसी पिटी लाइफ किसको चाहिए यार. 21 पे पढ़ाई ख़त्म, देन 23 पे नौकरी, देन 25 में छोकरी. सो when we talk about like usual timeline, this is what society expects from us, isn't it? कि आपका 21 तक पढ़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए, 23 तक आपके पास एक स्टेबल जॉब आ जाना चाहिए, देन 25 में आप अपने लिए एक लड़का लड़की खोजो, एंड देन एटलीस्ट 27 तक शादी करके सब सेटल हो जाओ. हैव अ होम, हैव अ कार, like have things settled out for yourself. Now this is what basically is society expect us to be, right? Then a late bloomer is someone जिनके लाइफ में भी जिस तरीके से यूजुअल टाइमलाइन सेटअप करी गई है उस तरीके से प्ले आउट नहीं होती, या फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल like there are people, okay, there are people who have figured out their life very early on. They know like what they want to do, and they do things on time, right? Literally they complete their education, get into college, complete their degree, and then they get into job and they get into stable career, right? And then things will play out for them on time because उनका एक setup बन चुका है, right? They have job, then they will get married, they will have babies. So some people in their life have that clarity of thought, have that stability in career, have that confidence, and everything is like clear for them. But then there are different set of people जिनके लिए मे बी इन सब चीज़ें होने के लिए उन्हें वक्त लगता है. It takes time for them. मुझे लगता है कि ये हमें जो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि लेट ब्लूमर्स क्या है, कौन होते हैं लेट ब्लूमर्स, ये भी बिकॉज ऑफ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक रीज़न. जो सोसाइटी है उनको लगता है दैट लाइफ मूव्स इन अ लीनियर वे, राइट? आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ऑन दैट, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट इट्स जस्ट अ जनरल बिलीफ दैट एवरी वन होल्ड्स, दैट लाइफ मूव्स इन अ लीनियर फैशन, कि चीज़ें एक दिशा में ही जाती हैं, हर किसी के लिए सेम प्ले आउट होता है. बट दैट्स नॉट द केस. हम सबकी लाइफ हर कैसे सेम हो सकती है? आई डोंट गेट इट. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट एवरी वन वुड गेट द सेम रिजल्ट in the same time or in the same age? It's not even possible if you see realistically also, because there are so many people around with different backgrounds. किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी के लाइफ में कुछ सिचुएशन आ जाता है, हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हर किसी के पास सेम वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट ऑलरेडी वहाँ पे बहुत डिस्पैरिटी है, राइट? ऑलरेडी चीज़ें बहुत इनइक्वल हैं, तो उन सबको तुम इक्वल ऐसे सेट ऑफ बॉक्स ऑफ रूल्स में कैसे डाल सकते हो, एंड देन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नो, by this age they should be settled, and by this age they should get married.
because I don't believe that life is same for everybody. Now, some people need time. Some people need to find out themselves. Some people really question. Abhi, जैसे for example, I would say there are many people who are okay doing jobs. There are some people who want to do something of their own. Then there are some people who are like innovators. They're like creators. Like they feel happiness when they like build something new. And how can we expect that all these three people can have same, like can have success in the same way or in the same timeline? That's not possible. Like if you are a person who is okay doing jobs, and that is not a bad thing. Honestly, ऐसा अगर डिबेट चल रहा है ना कि जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, it really depends on what you are expecting from life and what do you expect in your career. So it totally depends on that. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है. मैं वैसे केस में नहीं बोल रही हूँ. I'm just telling that like some people want different things from their life, and because they want different things from their life, they need to take specific actions जो उनके vision के साथ match करे, isn't it? So we can't really expect that someone who wants to get a job and want to have a stable career, and the other person who is like a who have a creative mindset and who wants to like innovate things or like bring solution to a problem, that both of them would not have same timeline at all, right? So just having this general thought that life is linear and everything moves in a linear line is, I don't think so that is the case. One point, like I had a lot of self doubt. I still go through that phase, but abhi like I have learned how to like balance it and manage it. But at one point, like I had like extreme self doubt ki why am I doing this? Why just not go back uh, to a job, because that is much more secure, much more stable, and like आप आराम से चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हो, life you can enjoy. So like I had like extreme self doubt at one point. So like I started reading at that time, and I started reading about like people in general, like famous people. So I came across so many people यार जो literally they got their recognition and they got their hard work paid off also late. And वो चीज़ जान के like it felt kind of like soothing that it's okay, life is not same for everybody, and there are actually people who take time in their 30s, their 20s, and like know about themselves for better, understand themselves better, hone their skills, get better at what they do, and then eventually that hard work has to go somewhere ना. वो hard work आपका जो ये time आपका जो लेट ब्लूमर्स हैं उनका टाइम ऐसे ही नहीं जा रहा है, राइट? वी आर लर्निंग थिंग्स, वी आर गेटिंग बेटर एट फ्यू थिंग्स, एंड इवेंचुअली वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए वो निकल के आएंगी. कोई चीज़ वेस्ट नहीं जा सकता. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. वो फिजिक्स वाली जो लाइन थी, इट इज़ एक्चुअली करेक्ट. अगर आपने हार्ड वर्क पुट किया है, अगर आपने मेहनत करी है, वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा, वो कहीं नहीं जाता है. इट एक्चुअली कम्स आउट. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, एंड लाइक वन जो मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, बिकॉज आई बचपन में अभी भी लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर, आई एम अ पॉटर हेड. So like bachpan I just enjoyed the movies because it was exciting, it was fascinating, because oh, who doesn't love magic yaar? So but then I when I read about J.K. Rowling, the author of Harry Potter, then I realized कि when she wrote Harry Potter, her life was not flowers and not कि सब चीज़ें अच्छी चल रही थी. It was not like that. She was a single mother at that time. She just had a divorce, and then financially she was struggling, and इतना बुरा फेज चल रहा था उसका that she literally told this later on कि वो phase literally defined her and made her much more strong.
So she does not look back and say कि अरे बहुत गंदा period था, but she do appreciate because that phase made her what she is today. So I remember I read that just because she was financially broke, उसे I think गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिलते थे एज अ सपोर्ट, एंड जो अपार्टमेंट में वो रहती थी वहाँ का हीटिंग सिस्टम वॉज नॉट गुड, एंड उसके पास लाइक एक बेबी था, सो दैट्स वाई शी यूज टू गो टू कैफ़े एंड कॉफ़ी शॉप में बैठ के शी यूज टू राइट एंड हर बेबी वुड बी ऑन द साइड, एंड एट दैट पॉइंट शी वॉज ऑल्सो like going through depression. And in that scenario, when all of those things, she completed first book of Harry Potter, and once she wrote it also, वो publisher house के पास गई, and like almost like 11-12 publisher house ने वो book reject कर दी. Just imagine वो book जो पूरे world wide अब सबको मतलब fan है, like किसी से भी पूछो कौन नहीं जानता होगा हैरी पॉटर को, एवरीबडी नोज इट, राइट? बट इमेजिन इट वॉज रिजेक्टेड बाई 12 पब्लिशिंग हाउसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन लाइक एक पब्लिशिंग हाउस के उसके बेटे को वो पसंद आ गया था, दैट्स वाई ही थॉट दैट लेट्स पब्लिश दिस. सो देन आई रियलाइज दैट हाउ सो मेनी पीपल आर देयर जिनकी लाइफ ऐसा नहीं है कि यार एक टेम्पलेट में चलेगा कि तुम्हें इतने तक या इतने तक या इतने तक ये सब करना है. इट प्लेज आउट. Eventually everything would make sense. So if you are a late bloomer and if you're like questioning things and like looking around and thinking कि यार इनके लाइफ में ये हो रहा है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, don't compare yourself with anybody. First of all, understand that this is your journey. Understand that things will fall in place when it has to fall in place for you, but that does not mean that आप सारी चीज़ें तो ऐसे हाथ टेक के यहाँ चलो जो होगा देखा जाएगा, वैसा नहीं होता है, राइट? यू शुड नो वॉट यू वॉन्ट, यू शुड वर्क ऑन दैट, एंड even if it does not happen in your timeline, that is okay. That's fine. You are taking your time to build things, that's totally fine. So my final reassurance would be that being a late bloomer is totally fine. It's not a problem. कोई problem नहीं है यार. As long as you are moving ahead, as long as you know कि आप hard work कर रहे हो, आप चीज़ें put out कर रहे हो, and आपकी timeline दूसरों के साथ match नहीं कर रही है, उसकी वजह से just आप परेशान हो, so don't. Being a late bloomer is totally fine because that is the reality, right? कि किसी की life एक पर्टिकुलर टाइम पे उनके लिए अनफोल्ड होती है, मेरी लाइफ एक टाइम पे अनफोल्ड होगी, आपकी लाइफ एक टाइम पे अनफोल्ड होगी, राइट? सो जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ अनफोल्ड अभी तक नहीं हुई है जैसा आप वो चाहते हो, जैसे आप चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दिशा में मूव ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है. मे बी यू आर इन दैट मिड फेज, यू नो, द ट्रांजिशन फेज. ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम पूरे स्टक हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ जैसे आपने इमेजिन किया है वो ऐसे प्ले आउट हुआ हो. सो यू आर इन बिटवीन द ट्रांजिशन फेज, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग, यू कैन एब्सोल्युटली गेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. वो हो सकता है, isn't it? So don't feel sad or don't feel that just because people of your age or people around you are moving तो आप नहीं मूव करोगे. कहाँ जाओगे? क्यों नहीं मूव करोगे? काम कर रहे हो, कभी ना कभी तो वो निकल के आपके लिए आना ही है ना, चाहे वो अभी आए, नेक्स्ट साल आए, 2 साल बाद आए. That is not something that we are entitled to, right? What we are entitled to is like working, doing, putting our efforts, and then believing that if we are doing it, we'll absolutely get it. Why would we not? Right? So to end this video, I would actually end this taking a quote, like quoting Bhagavad Gita. Like there is an absolutely beautiful श्लोक जो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हूँ, और मुझे उस श्लोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफ में एक सुकून मिलता है, एंड आई एक्सेप्ट थिंग्स ईजीली. एंड बीइंग अ लेट ब्लूमर माई सेल्फ, लाइक मेरे लिए भी चीज़ें ऐसे पूरी तरीके से क्लियर आउट नहीं होगी है, और आई एम, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आई एम नॉट सक्सेसफुल ऑन पेपर because I don't have a big achievement till now, right? But what
there is something that has like brought a lot of peace in my mind is this one slok from Bhagavad Gita, Karmanya Vadhikaraste Ma Phalesu Kadachana. I don't know if it's Kadachana or Kadachan, I'm just forgetting, but what it translates to in Hindi is a very a popular saying, you might have heard it, कर्म करो फल की चिंता मत करो. I know that it's easier said than done, but honestly, at one point you would realize that what we have in our hand is actually putting the work and doing the work. We don't have a control when we see the result of that work. So instead of like getting attached to that result, that oh, I need to get the result right now, I need to get the result because I'm doing the hard work. So instead of focusing on the result, ये better है कि आप अपने कर्म करो, और just because आप अपने कर्म कर रहे हो, understand that वो कर्म action reaction वाला formula है यार, वो आएगा. You will eventually get result of the work that you are putting in. Okay, so with that, I end this video. I hope that by now you would feel a bit like lighter, knowing that there are so many people around us who are in the same boat as us. So it's absolutely okay if we are taking time to understand ourselves, to build a life which feels much more like it ours, isn't it? So that's absolutely fine. Take your time and bye, my love.